Good evening, everyone. Good evening, Sven. Is turn on the cameras. So we have done with the double angles and triple angles. So now we'll go with the form. We'll go with the trigonometric questions, not questions. So we have a few concepts to discuss. Few concepts to be discussed. So let me tell you, guys, turn on your cameras, everyone. Anjali, where were you? Why did you absent for so many classes? Turn on your camera, so please. Sir, I was a bit sick, so I couldn't attend. I saw all the videos though. Acha. Mhm. Okay. What about Aditi? Have you gone through the class notes? Yes, sir, I've gone through the notes. Good. So is there any doubt? I think already you might have done with all these things, isn't it? I think you might have done with everything, isn't it, Aditi? Hello? Just a minute, 1 second. Who else has to join? Everyone join. Yes, sir. Where is Amrut? Amrut, tell me, Amrut, have you done with your class revision notes? Have you done with your revision of class notes? Yes, sir. Hmm, good. So today we'll discuss very beautiful concept, which is
So what is the date today? 8, right? 8. Some are different. Some are different into product formulas. Some are different into product formula. So we now this is some new concept. So each and everything is very important, guys. Each and everything is very important. So everyone try to understand this. ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है? बड़ा सा चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो I hope you guys are understanding. One second. Arvind, tell me, Amrut, tell me what is sum and what is the formula for cos A plus B? Sir, your voice was low. Can you repeat? What I'm talking is, can you please tell me what is cos A plus B formula? Sir, cos A plus B. Yes, beta. Sir, forgot, sir. Forgot then what did you do, man? Where you are revising? Tell me. Huh? Inga revision inga. Tell me. Tanvi, you tell me. So cos A plus wait, I will just say anything there. So cos B plus sine minus sine A sine B. Yep. Sir, can I? What is cos 2A formula in terms of tan, Tanvi? Immediately you should tell me. इतना इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, आपको मजा हो रहा है? एक कोई भी नहीं सीख रहा है क्लास में, जो भी बच्चा है कोई भी एकदम डिसिप्लिन से सीख नहीं पा रहा है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो आप। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कितना क्यों बोल रहा हूँ इतने इतने क्या बोलते हैं इतना इंटेंसिटी से। सो दैट मच इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। आप कहाँ भी जाओ ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगा, मैंने बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला विल बी इन्वॉल्विंग एवरीवेयर। So let us take bit time to solve all these kind of concepts. ठीक है? Please, you simultaneously you guys keep solving the questions. Actually, are you understanding my point? So don't tomorrow I'm gonna ask you. So till today's class, whatever the formulas we have learned, whatever the formulas I taught you, everything I'm going to ask. ठीक है? So the sum or difference into product formula. The first formula is coming to sine C plus sine D, sine C plus sine D. So 2 sine C plus D by 2 into cos C minus D by 2. ठीक है? 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. The same formula, sin C minus sin D. Sin C minus sin D formula. What is the same formula? Bus
साइन की जगह में कास लिखना है, कास की जगह में साइन लिखना है बस। इनटू, इधर बीच में इनटू आएगा, प्लस नहीं आएगा, तो ठीक है। तो थर्ड वन, थर्ड फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस बी। ये आपको फॉर्मूला ए प्रूफ चाहिए तो कैसा कर सकते हैं हम लोग? इन प्लेस ऑफ यू सी यू टेक ए प्लस बी, इन प्लेस ऑफ डी यू टेक ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इफ यू ऐड सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ऑल राइट, सो दैट इज अ प्रूफ। प्रूफ नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बेटा आपको प्रूफ चाहिए तो मैंने बोल रहा हूँ, अगर लेट लेट सी इज इक्वल ए प्लस बी ले लीजिए एंड डी इज इक्वल ए माइनस बी ले लीजिए, एंड यू जस्ट अप्लाई साइन सी ना, साइन सी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। If you add these two and you will get this formula. In place of A, you must write C plus B, and in place of B, you must write C minus B. All right. So C minus B, ठीक है। A के जगह में C plus B, B के जगह में C minus B, ये लिखना है आपको, वो आ जाएगा प्रूफ। ठीक है। So next formula sin C plus, so cos C plus cos D formula। cos D plus cos D formula क्या होता है? देखो बेटा, ये 2 times of cos C plus D by 2 into cos C माइनस डी बाई 2। आ रहा है समझ? तो देखो फोर्थ वन, तो cos C माइनस cos D, ये भी होता है देखो -2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। आ रहा है समझ? तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डिवाइडेड बाई C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2। साइन C माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। cos C प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू cos C माइनस डी बाई 2। cos C माइनस cos डी का इधर माइनस है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इधर भी माइनस आएगा, ठीक है। cos C माइनस cos डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। देखो ये cos का फॉर्मूला है ना, cos का फॉर्मूला, इधर इधर भी cos इधर भी cos, अगर आया तो साइन, इधर भी साइन इधर भी साइन, मगर साइन का फॉर्मूला में ऐसे ना होगा। साइन सी प्लस साइन, एक अगर एक फर्स्ट साइन आया तो इधर कास आएगा, इधर कास आया तो इधर साइन आएगा, ऐसा होता है। याद रखने का तरीका मैंने बता रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है। अगर प्रूफ भी चाहिए, मैंने बताया आपको साफ साफ प्रूफ। कास के जगह में इधर देखो, सी के जगह में ए प्लस बी रख लो, एंड डी के जगह में ए माइनस बी रख लो, एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला तो आपको पता है, वो जस्ट इंसर्ट करके क्लब कर दो बस, यू जस्ट क्लब इट आउट देयर, so you will able to understand it clearly. All right. You understand, children? Any doubts? Any No, doubts? sir. No, sir. Hmm. चलो ठीक है, हम लोग अभी दूसरा फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। सो द प्रूफ इज, आई टोल्ड यू गाइस, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। सो उधर ऐड करने के बाद आपको ये आ जाएगा, ठीक है। You will get two things. So from चलो, we have done this, right? So ध्यान से, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूले, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूले। देखो क्यों इसका नाम ऐसे क्यों आया, इधर सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, इधर इनटू है ना, सब इनटू है ना, सम एंड प्रोडक्ट इनटू फॉर्मूले, सम और डिफरेंस
इंटू प्रोडक्ट फॉर्मूले। तो ध्यान से देखिए बेटा, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है लास्ट वाला फॉर्मूला में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद रखिए। आ रहा है समझ? चलो बेटा नेक्स्ट हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। शो दैट, मेक इट फास्ट, शो दैट साइन 8x, इस फॉर्मूला का अप्लीकेशन, इस फॉर्मूला का हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को देखते हैं अभी। साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x माइनस cos 8x इज इक्वल, इसको cot 3x प्रूव करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रूव करो। इसको कैसा प्रूव कर सकते हैं? देखो मुझे हिंट दे दीजिए, आपको हिंट पता होना चाहिए। हिंट का मतलब सॉल्यूशन, आइडिया, आइडियोलॉजी विच यू गेट, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया यू मस्ट गेट। देखो हाउ इट इज लुकिंग लाइक साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। फॉर्मूला बस मुझे पता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और है समझ आ रहा है ना? कोई डाउट है इधर? बेटा इधर सी का वैल्यू 8x है, डी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 8x, डी का वैल्यू 2x। इधर सी का वैल्यू 2x, नीचे डी का वैल्यू ये है। ध्यान से, डिवाइडेड बाई cos c माइनस cos b फॉर्मूला, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2 sin 2x प्लस 8x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 8x बाई 2। देखो इधर 2 2 कर दिया मैंने। एंड देखो साइन, सर इधर साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कैंसिल कर सकते। साइन ये पूरा एंगल है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग उधर कैंसिल कर सकते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट इट फुल्ली, देन यू कैंसिल इट आउट। सो 10x बाई 2 साइन 5x, एनी डाउट, इंटू कॉस 3x 6x बाई 2, कोई डाउट? कोई डाउट? माइनस साइन अगेन 5x इंटू कॉस कॉस माइनस 6x बाई 2। तो उसको क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस 3x। गाइस आई टोल्ड यू हियर, साइन का माइनस एंगल कभी भी क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये कितना आदमी को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू डू रिमेंबर दिस? सी हियर, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इधर देखो, जो मुझे ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा नीचे। आपको आ रहा है समझ? हेलो, ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद क्या आ जाएगा मुझे? cos 3x डिवाइडेड बाई माइनस इन माइनस प्लस साइन 3x। तो मुझे आ गया cos बाई साइन cot 3x। कोई डाउट? हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट? एनी डाउट चिल्ड्रन? No, sir. वेरी सिंपल राइट? हाँ, I'll give one more question. Please do copy this one second. Next question. Sir, can you show up once? Copy simultaneously. Solve it yourself. This is a homework question to everyone. Prove that sin A plus sin 2A plus sin 4A plus sin 5A whole divided by cos A plus cos 2A plus cos 4A plus cos 5A is equal to tan 3A. All right. So prove this homework question to everyone. See here, I would request you to take this is as one part and this is as one part. Apply the formula here. ठीक है, and prove it. Clear? Whatever I just denoted with the brackets, you just take it as one part and prove it.
Yes. Done. Done. Chalo. Let us go with the next question. So the question is without using table. Without using table. कौन सा टेबल? वो sin 30 cos 30 फॉर्मूला था ना, एंगल टेबल. Without using table, prove that the following. Prove that question है cos 40 degrees प्लस cos 50 डिग्रीज. देखते हैं ये कितना आदमी करते हैं. अभी टका टक करके बताइए मुझे. मेक इट फास्ट. ओनली 20 सेकंड्स आर टाइम. ओनली 30 सेकंड्स आर टाइम. देखते हैं कितना आदमी करते हैं इसको. अरे यार, सिंपल क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग विल यू सॉल्व? डन. कितना आदमी किया? Shall I give a hint? Take it as a homework if I give a hint. Okay, sir. See here, if you use your common sense, look at this here. अगर 40 को 80 को ऐड करते हैं तो 120 मिलता है. 50 को 70 को ऐड करते हैं तो 120 मिलता है. तो cos 40 cos 80 you take together, apply the formula. Understand? You take Yes, sir. cos 40 cos 80 together. Cos c plus cos d formula उधर लगाइए. अभिनय, why are you late? Sir, actually, WhatsApp was not responding, sir. Why? Sir, actually, WhatsApp was not responding and the laptop turned itself and it was taking updates. So it ఏమైందంట took long. వైశాఖ్? ఏమైంది? జ్వరం వచ్చిందా? ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతలేదంట అది? ప్రాబ్లం ఏందంట వైశాఖ్ది? Something network issue, sir. Something network issue? Okay, so far we have discussed this one. So science sum or difference into product formula. I'll be giving a notes. Please revise it, Abhinay. Right? Guys, look at this here. What I told you here. I just asked you to write cos solution. I'm writing cos solution here. Cos 40 together. ये क्या है? Co 40 लिख रहा हूँ मैंने. Cos 40 लिखना चाहिए. I'm writing cos 40 plus cos 80 together and cos 50 plus cos 70 together is equal to, I have to prove this one, right? Here to apply cos c plus cos d formula, here also cos d plus cos d formula. Just do it out, you will get it out. Clear? Understand? You understand, children?
This is also homework. Abhinaya, you just now you came here, so look at the sin c plus sin d formula. C के जगह in place of c I could have anything. I can have any angle. I can have any number. So these are the formulas. So in last formula, if it is minus, here also you will get minus in the fourth one. So these are the fourth formulas. If you want to go through this lecture, you will be getting a link. So please go to that. Clear? So those who are joining late, I'm not going to revise again. I'm sorry. So we have to finish the syllabus as soon as possible. So we'll go forward. Thank you, children. So this is a homework question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग फटाफट जितना भी क्वेश्चन हो सके, एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल विल सॉल्व इट आउट. क्लियर? देखो, हाँ, इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी and cos A is equal to cos B. Guys, I'm telling you, I'm not going to solve your exercise problems, as since it's a JE class, I'm just teaching you what is what. Concepts क्या क्या होता है, ठीक है, वही teach करने वाला हूँ मैं. You have to solve your exercise problems, or else your school teachers will teach you exercise, and you have to simultaneously, now whatever the concept I'm giving you, you can apply the concepts whichever we are learning here in your solving exercise problems. So just go through that, solve the problems over there by using the concepts whichever I'm teaching you here. Clear? Then prove that sine of a minus b by 2 is equal to 0. Okay, so we have to prove this one. So how can I prove it out here? So solution, how can I prove sin a is equal to sin b given, cos a is equal to cos b given? Then prove that sin a by b, a minus b by 2 is equal to 0. So now guys, can I write like given here, can I write sin a minus sin b is equal to 0 beta, as well as cos a minus cos b is equal to 0. Can I write? I'm shifting this side and this side. Clear? Can I shift like that? Of course. Yes or no? Everyone turn on your cameras. Chalo. After shifting out, what can I do here? Cos a minus, so sin a minus sin b formula, like sin a minus sin c minus sin d formula, sin c minus sin d formula beta. How it is looking like? Can I apply sin c minus sin d formula? Guys, there is no rule that we have to apply. If I get c somewhere, then only I should apply this formula. There is no rule something like that. In place of c, I could have any number, any angle, any alphabet, any whatever. Okay. So look at this now. So sin c minus sin d formula is what? 2 times of cos a plus c plus b by 2 into sin a minus b by 2 is equal to 0. This is one case. Cos a minus cos b formula क्या आया था? Minus 2 times of sin a plus b c plus d by 2 into sin c minus b by 2. This was my formula, isn't it? So let us take this as my equation number 1. Let us take this as equation number 2. All right, what can I do now? Tell me, what can I do now? See, what can I observe from this? Here sin and cos simultaneously can't be 0. ठीक है, sin and cos simultaneously cannot be 0. आपको समझ में आ रहा है? Sin and cos simultaneously it cannot be 0 guys. So look at this, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना. So whenever you have something like, अगर आपके पास cos theta sin theta है is equal 0 है, तो these two cannot simultaneously 0. sin theta is equal 0, cos theta is equal 0. हम लोग simultaneously ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. cos theta is equal to 0 as well as sin theta is equal to 0. हम लोग ऐसा simultaneously we never write. If cos and sin together are there, so we never write sin and cos as 0. So हम लोग इधर क्या लिखते हैं? अभी देखो, इधर मैंने ये बोल रहा हूँ बेटा, ये sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2 है ना, cos a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2. अगर ये है simultaneously, so as you write as
as cos a plus b by 2 and sin a plus b by 2 can't be simultaneously 0. Simultaneously 0. So since that is the reason, therefore then sin a minus b is by 2 is equal to 0. ये प्रूफ है हमारा. ठीक है, ये होगा हमारा आंसर. कोई डाउट इधर? Any doubts? No, sir. Make it fast. This is a very important note here. Simultaneously 0 नहीं हो सकता है, तो ये नहीं 0 होगा तो बाकी बचाया क्या है? So guys, what is the remaining thing? This one and this one. So that is what is asking us to prove. All right. ठीक है. I just remained with sin a minus b by 2. Next question. Next question. I won't give time, guys. You Sir, don't. can you all please fill up, sir, last line. अरे भाई देखो, I won't give extra time. I said. So Done. you have to do by your own. After going home, you have to do by your own. Just give a space, leave that question, and just do by your own. All right. Next question. Show that sin a plus sin 5a plus sin 9a all divided by cos a plus cos b plus cos 9a is equal to tan 5a. Homework. ठीक है, homework. Let me give a hint here. This is homework. आपका हिंट क्या है पता है आपको? देखो बेटा, हिंट देखो, मैंने बता रहा हूँ आपको. You can take it as you write sin phi a as it is. You write first solution. Look at this here. Here 1a plus 9a, 10a. 10a by 2 how much? 5a. So 5a को separate कर दो. sin a. ऐसा आइडियाज आपको आना चाहिए. Are you understanding why I'm separating? Why I'm separating cos phi a and sin phi a? Are you getting my point, children? बेटा आपको समझ में आ रहा है? ये देखो, मैंने इधर दोनों को थोड़ा साथ में लिख दिया. I just wrote these two trigonometric functions together. Understand? Why? Why? Because देखो, मैंने sin c plus n d फॉर्मूला लिखूँ तो 2 sin c a plus 9a. How much a plus 9a by 2? 10a by 2. 10a by 2 मतलब 5a. Again 5a. I'm getting 5a something. In terms of 5 I'm getting. So that's how I can do that simultaneously. Homework. Please take it out. Simultaneously you apply the formula here and just do the question. Solve the question. Clear? Shall we move forward? Shall we move forward? Understanding, guys? Are you able to understand? मैंने formulas इधर बताया थी, लेकिन वो बताया था मैंने. देखो इधर sin c plus sin d formula. Yes, sir. इसको देखकर, like you have to look at these formulas simultaneously, go for that. Everything without knowing these formulas, you cannot solve the questions whichever I'm giving you as a homework. This is a homework. Next question. Next question, guys. We didn't do this homework. Solve the question remaining one. Next question. So show that cos 2a plus 2 cos 4a plus cos 6a divided by cos a plus 2 cos 3a plus cos 5a is equal to cos a minus sin a into tan 3a into tan 3a. This is also similar thing. Look at this here. What can I do here? If I take these two things, so look at this here. Everyone try to understand this and this thing. 6a plus 2a, 8a. 8a by 2 how much? 4a. So I can write something related to that, isn't it?
or else you do one thing, so मैंने cos 2a as it is I'm writing, so 2 times of cos 4a को मैंने I can write 2 times of cos 4a as cos 4a plus cos 4a plus cos 6a. Can I write? Any doubts? So cos 3a plus cos 3a plus cos 5a. See, 2 times of cos 3, I'm writing cos a plus cos 3a plus cos 3a, 2 times of cos 3, isn't it? Can I write or not? Now can I apply here? Can I apply something called, look at this. What can I apply here? हाँ, so 6a 4a इस दोनों को and इस दोनों को can I apply? All right. And इस दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? अंडरस्टैंड? सो 2a and cos 4a, cos 2a plus cos 4a formula. Why? Because 2a plus 4a how much? So 6 by 2, so 3a, it gives me 3a. So again 4a plus 6a gives me 5a. So in the denominator also same thing I'll get, so I can strike it out for further calculation. आपको समझ में आ रहा है? देखो बेटा मैंने इसको कैसा लिख रहा हूँ, देखो. So cos 2a plus cos 4a I'm writing here, cos 2a plus 4a मतलब 2a plus 4a by 2 into cos 2a minus, हाँ आई नहीं तो आपने पहले ऐसा एकदम you write it like this, cos 4a plus 6a together plus cos 2a plus cos 4a together all divided by cos 3a plus cos 5a together plus cos 3a plus cos 3a together, cos a plus 3a, sorry, cos, हाँ. Alright, so cos 4a plus 6a how much? 2 times of cos 4a plus 6a by 2 into cos 4a minus 6a by 2, or you write, or else you take, इसको मैंने c मान रहा हूँ, इसको मैंने d मान रहा हूँ, ठीक है. तो 6a plus 4a and 6a minus 4a straight away will get positive, no? Plus cos 2a plus, so 2 times of cos 4a plus 2a by 2 into cos 4a minus 2a by 2. Guys, are you getting my point how I am writing? इधर अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एवरीवेयर आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ओनली. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो 2 times of again same cos 5a plus 3a by 2 into, so cos 5a minus 3a by 2. Alright, so plus 2 times of cos 3a plus a by 2 into cos 3a minus a by 2. Alright, so 2 times of cos 5a into cos 2 times of cos 2a by 2 excuse me, so cos a plus 2 times of cos 3a plus, not plus, into cos a all divided by 2 cos 8a by 2, so 4a into cos a plus 2 cos a, so 2a into cos a. आ रहा है समझ? कोई डाउट इधर? एनी डाउट चिल्ड्रन? एनी डाउट? हियर 10a by 10a by 2 5a 2a by 2 a. Are you understanding? Are you relate the things how I'm just doing? Is that clear? Aditi, understanding? Yes, sir. Tanvi ji, Disha ji,
अंजलि, अरविंद, अमरुद। Yes, sir. देखो, कैन आई टेक 2 cos A कॉमन हियर? इधर देखो, इधर 2 cos A and इधर also 2 cos A. Either 2 cos A, either also 2 cos A. Can I take 2 cos A in the numerator and denominator? 2 cos A common in the numerator. So what I left with now? Cos 5A plus cos 3A. Isn't it? Isn't it, guys? So 2 cos A in the denominator also. So cos 4A plus cos 2A. So this gone. So cos 8A divided by, not cos 8A, sorry. So what I left with, again the formula 5A plus 3A. So क्या आता है formula? Cos 2 cos C plus cos D formula. Cos C plus cos D formula. So 2 cos 8A by 2, 5 plus 3, 8A by 2. Can I write straight away 4A? Guys, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिख लो भाई, क्यों परेशान क्यों है? Divided by, again same thing, 2 cos 4A minus 2A by 2 into cos 4A minus plus 2A by 2. Clear? आ रहा है समझ इधर? So 2 times of cos 4A into cos A divided by 2 times of cos 3A into cos A. आया समझ? Any doubt here? So 2 cancel, cos A cancel. So cos 4A I left with and cos 3A. Right? So here what I have to prove, I have to prove something in cos A minus sin A into tan 3A. अरे यार थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कैसा प्रूव करेंगे इसको? देखो cos 4A can be written as how again? Cos 3A plus A. Why? Because in the denominator I have 3A, so I can write in terms of 3A. So cos 3A. So again cos A plus B formula. Cos A plus B formula apply. Cos A cos B minus sin A into sin B divided by cos 3A. So now just individually, just can I do that? Cos A minus tan 3A into sin A. Yes or no? Yes or no? I can. Arey bhai. See, if I write direct step, I think you are not responding. So what I should understand from that? I'm just writing like this. So this will go off. All right. So what I remain with now? So cos A minus sin by cos 3A tan 3A into sin A. Avlada. Yes or no? So this is my RHS part. Therefore hence proved. Hence proved. ठीक है, आ रहा है देखो, cos A minus sin A into tan 3A. That is what I got here. Look at this. Understood? Any doubt? Any doubt? No, sir. Done? Chalo, next question. You can take this, you can copy from the notes. I'll be sharing the notes. So again the question is sine 10 degrees plus sine 50 degrees minus sine 80 degrees plus sine 140 degrees is equal to root 2 into sine 25. You have to prove this. Prove this. Okay, without using table. This is also without using table.
विदाउट टेबल, विदाउट यूजिंग टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मंत्रा कीजिए। क्या मंत्रा कर सकते हैं, देखो इधर इस दोनों को मिला के, इस दोनों को मिला के कुछ भी कर सकते हैं। साइन 10 प्लस 60 बनता है, सो 60/2 30, एंड इधर 140 प्लस 140 प्लस 80 हाउ मच, 220/2 110, ऐसा कुछ भी करते हैं ना। Do something whatever you get in your mind, do something and just do this homework. If you're not understanding, ask me in the next class. ठीक है, any doubts, any doubts, any doubts? So now look at this here. Look at these are the factorization formulas. ठीक है, what are the formula we have used here? These are the factorization formulas. So some formula, for some are difference formulas into, some are difference into product, right? This is for factorization. ये तो हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए तो यूज कर रहे थे ना, ये फैक्टर्स है ना सब। These formulas we are using for factorization. Now to defactorize, ये फैक्टराइज है ना, इसको डीफैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो। सो हम लोग डीफैक्टराइजेशन, ये डीफैक्टराइजेशन के लिए हम लोग ये करते हैं फॉर्मूला, देखो। प्रोडक्ट इनटू सम, नाउ लुक एट दिस, प्रोडक्ट इनटू सम एंड differences. So product into sum and differences. So इसका formula same, the above the formula, whatever the formula I wrote in the above, the same formula I am writing here. Look at this here. Sin A plus B into, sorry, plus sin A minus B. इसका formula होता है 2 times of sin A into cos B. Cos B. Same formula. So sin A plus B minus sin A minus B, formula coming to 2 cos A into sin B. Next formula is sin, next cos, right? So cos A plus B plus cos A minus B gives me that 2 cos A into cos B. Next formula is cos A plus B minus cos A minus B gives me that minus 2 times of sin A into sin B. ठीक है, minus 2 times of sin A and sin B. All right, so these are the formulas. Look at this, same thing guys, same thing. Just let us compare here, let us compare the above formulas. What I'm writing here, in place of, guys, in place of C plus D, in place of C plus D I'm writing A. In place of C plus D by 2 I'm writing A, guys. Everything is same. So इसके जगह में in place of this thing, in place of this full thing I'm writing A, in place of this thing I'm writing B. So look at this here, in place of this thing what I wrote, in place of C I must write A plus B and A minus B. In place of C I wrote A plus B, in place of D I wrote A minus B, and everything is same. Look at this here, मैंने क्या लिखा हूँ देखो, इधर sin C के जगह में A plus B, in place of C I am writing A plus B, plus sin D के जगह में A minus B is equal to sin this fully A into cos this fully B. That is what I am writing. So here sum or difference formula into product. Now this product into sum, product into sum. All right, same formulas. If you compare after going home, you will get what exactly we were talking about. Look at this. Look at the same formulas. So what is the formula? What was the formula here? So if I write in terms of C plus D, look at this here, sin sum or difference, right? Sin C plus D, sin C plus D into sin minus. Look at this here, sin C plus sin D, sin C plus sin D. Yes, sin C plus sin D. Formula is
is equal to 2 times of sine. A is what here? C plus D by 2 into cos. B is what here? C minus D by 2. That's how I used to write. For sum and product. देखो इधर sum into product, sum and product formula I just converted into product here. Sum and difference formula, sorry. Sum and difference formula I converted into product earlier, previously for factorization. For defactorization what I'm doing? Product into sum. उधर मैंने क्या किया था? उधर मैंने बनाया था सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में, इधर प्रोडक्ट को लेकर मैंने सम एंड डिफरेंस में बता रहा हूँ, ठीक है. सो गाइज फॉर फैक्टराइजेशन व्हाट आई हैव डन, फॉर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला को आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉर फैक्टराइजेशन, राइट. here what I'm doing is for product I'm just converting into sum and difference. All right, for product I'm just converting into product. Are you getting my point? Yes or no? Tell me. Hello. Yes, sir. So, okay, children, I have a class for your seniors now. So, whatever the formulas we have done so far, please go through that. I'm going to ask each and every formulas in tomorrow's class. I mean, upcoming class. Probably on Saturday, we'll be having our class day after tomorrow. So, I'm going to ask each and every student. I'll be calling upon your names and I'll be asking the formulas, all formulas. उसको क्या बोलता है, रट्टा मार के आते हो, क्या करते हो, मुझे पता नहीं, ठीक है. उसको सीख के आना चाहिए. रट्टा मारने का मतलब वो ऐसा याद, वी आर नॉट सिंपली रिमेम्बरिंग ओवर देयर, वी नो व्हाट इज व्हाट, we know the proofs, how we got that formula, what exactly that formula is being called, everything we know, guys. The only thing we need to make sure is you are learning each and everything in a clear cut way. Understand? That's what. Try to learn all the formulas. Come to the next class. Thank you. Goodbye.